Exercise 15.1 का question 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. मतलब box के अंदर में जो number of marbles है, number of marbles in total is 5 plus 8 plus 4. ये निकलता है 17. मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स राइट. अभी क्वेश्चन है, one marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? तो पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना what is the probability that the marble whatever is taken it is red. तो यहाँ पे number of favorable outcomes is nothing but number of red balls. वो है 5. Therefore, probability of drawing a red ball will be favorable outcomes divided by all possible outcomes. मतलब 5 by 17 हो जाता है. अगला सेकेंड क्वेश्चन, इनमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में व्हाइट बोला हुआ है. नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है क्वेश्चन में 8 दे रखा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग या व्हाइट बॉल is equal to number of favorable outcomes divided by all possible outcomes, which is 8 by 17. Third, the marble should not be a green. मतलब number of favorable outcomes can be number of, it should not be a green. इसका मतलब it can be either red or it can be white. So number of red balls plus number of white balls, which is equal to 5 plus 8, वो निकलता 13. Therefore, probability of drawing a non-green ball, non-green ball is equal to 13 by 17. क्योंकि all possible outcomes तो still 17 ही है, फेवरेबल जो है ये 13 है. ये इस दूसरी वे से भी कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिव वे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग या ग्रीन बॉल, तो डिनोमिनेटर तो 17 ही रहेगा. न्यूमरेटर जो है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स विल बिकम द फेवरेबल, विच इज 4. तो 4 by 17 होता है. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट अ ग्रीन बॉल मींस वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. तो ड्राइंग या नॉन ग्रीन बॉल विल बी 1 minus ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल, मतलब 1 minus 4 by 17, वो भी जो है 13 by 17 ही निकलता है. मतलब ये दो वे से सॉल्व हो सकता है ये. अगला क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन 10, ए पिगी बैंक contains 100 50 paise coins, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coins and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin? Number 2, will not be a 5 rupee coin. So सबसे पहला, number of all possible outcomes, वो जो है कोई सा भी जो काउंट है नंबर ऑफ बॉल्स का, उसमें से कोई सा भी हो सकता है. मतलब
100 50 पैसे कॉइन बोला हुआ है यहाँ पे, तो 100 लिख दिया हमने। 50 1 रुपी कॉइन्स बोला हुआ है, तो 50 हम लिख दिया। 20 2 रुपी लिखा है, तो 20 हमने ऐड किया। 10 5 रुपी लिखा है, 10 भी हमने ऐड किया। 100 plus 50 150, 150 plus 30 180 हो जाता है। मतलब all possible outcomes can be any of those 180 coins. Now, first one 50 पैसे coin, तो यहाँ पे number of favorable outcomes will be, ये 100 में से कोई सा भी चुनेंगे तो that becomes the favorable, मतलब number of favorable outcomes है 100. Therefore, probability of getting 50 पैसे coin is equal to number of favorable outcomes divided by all possible outcomes. तो simplify करने से 10/18 होता है। Further 2 5s are 2 9s are 5/9 हो जाता है। अगला second part of the question, will not be a 5 rupee coin, मतलब if it is not a 5 rupee coin, it should be either 50 पैसे or 1 rupee. तो हम बेस्ट वे तो 5 rupee coin का probability हम मानेंगे। Probability of getting rupee 5 coin is all possible outcomes है 180. यहाँ पे favorable outcomes जो है number of favorable outcomes, number of 50 पैसे coins, sorry 5 rupee coins. कितना 5 rupee coins है क्वेश्चन के हिसाब से? 10 5 rupee coins है, तो यहाँ पे हो गया 10। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा, इसका मतलब ये निकलता 1/18. Therefore, probability of not getting, that is the actual question, not getting rupees 5 coin will be 1 minus of 1/18, वो निकलेगा 17/18। यही है सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. So you see figure. What is the probability that the fish taken out is a male fish? A simple question है, number of all possible outcomes is number of male fish plus number of female fish. ये नंबर ऑफ मेल फिश दे रखा 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश दे रखा 8, तो ये निकलेगा 13। अब हमें कोई सा भी एक फिश को निकालने के लिए, एंड दैट टू दे वांट दैट टू बी ए मेल फिश, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए मेल फिश इज इक्वल टू, मेल फिश है फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है नंबर ऑफ मेल फिश है, वो है दिया हुआ क्वेश्चन में 5। तो फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 13 आएगा। 5/13 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8. See the figure. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? सबसे पहला, number of all possible outcomes. कोई सा भी 8 नंबर में से कोई आ सकता है, मतलब 8 is the total possibilities. अब पहला 8 आना बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक ही बार है यहाँ पे 8, बाकी सब डिफरेंट नंबर है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1 सिंस 8 is occurring
only once. So therefore, probability of what is that? Probability that it will point at 8. Probability of arrow pointing at 8. Number of favorable outcomes divided by all possible outcomes. तो हो गया वो 1/8. Second part of the question में क्या बोला है? An odd number. यहाँ पे odd number है 1357. Means number of favorable outcomes. या पहले तो मैं लिखूंगा favorable outcomes क्या है? 1, 3, 5 and 7. तो इसका मतलब number of favorable outcomes है 4. Therefore, probability of arrow pointing an odd number is number of favorable outcomes divided by all possible outcomes. 4/8 हो जाता है 1/2. Third part of the question है यहाँ पे third part में a number greater than 2 मतलब favorable outcomes क्या हो सकता है? Greater than 2 means 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 6 नंबर है तो 6 हो जाता है. Therefore, probability that arrow pointing a number greater than 2 is 6 divided by 8. उसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो सकता है. फोर्थ पार्ट है a number less than 9. A number less than 9 means यहाँ पे इस what do you call ये जो सर्कल है इनमें सभी लेस देन 9 ही है. मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो ऑल हो जाता है. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 8 ही है. Therefore, probability that arrow pointing to a number less than 9 is number of favorable outcomes divided by all possible outcomes. तो हमें मिलता है 1. इसका मतलब ये वाला जो इवेंट है ये है श्योर इवेंट. तो फोर्थ पार्ट तक की है 12 वाला क्वेश्चन में. तो अगला 13 क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. Second, a number lying between 2 and 6. Third, an odd number. सबसे पहला एक तो हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. वो है 6. Since outcomes possible are 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो दैट इज वाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 6. पहला क्वेश्चन प्राइम नंबर मतलब फेवरेबल आउटकम्स और 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है. Therefore, probability of getting a prime number is number of favorable outcomes जो है 3 ही है. तो यहाँ पे हो गया 3/6 which is nothing but 1/2. ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन. अगला सेकंड क्वेश्चन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो है नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 मींस 3 है, 4 है, 5 है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 3 ही है. Therefore, probability of getting a number between 2 and 6 is equal to 3 divided by all possible outcomes which is 6 again. तो 1/2 होता है वापस.
थर्ड क्वेश्चन है, टू बी एन ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑड नंबर्स होने से 1, 3, 5 होता है। यहाँ भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 3 ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो भी 1/2 ही है। तो ये 3 ही है। अगला क्वेश्चन में जाएंगे, 14, क्वेश्चन 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, and then fourth the jack of hearts, fifth a spade, and sixth the queen of diamond. तो प्लेइंग कार्ड्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा हुआ, यही है। 52 कार्ड्स पॉसिबल है। ये पहला वाला क्लब्स है, इनमें एस टू 10 नॉन फेस कार्ड्स है। सब्सिक्वेंटली ये तीनों जैक क्वीन किंग जो है फेस कार्ड्स है। लाइक दैट स्पेड में भी उस हिसाब से है, हार्ट्स में भी उस हिसाब से, डायमंड में भी उस हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पहले तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कोई सा भी 52 कार्ड्स हो सकता है, तो 52 हो गया। फर्स्ट वन, किंग ऑफ रेड कलर, फेवरेबल आउटकम्स, किंग ऑफ रेड कलर, द किंग डायमंड हो सकता है, किंग हार्ट्स हो सकता है, मतलब के डायमंड, के हार्ट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग इज किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर, दैट इज व्हाई वी हैड चूजन डायमंड एंड हार्ट्स। मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 2 ही है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर is equal to number of favorable outcomes divided by all possible outcomes, 2/52, इसका मतलब 1/26 है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जाएंगे, तो क्या बोल रहा है? ए फेस कार्ड, ये फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी हम फेस कार्ड बोले तो ये जो है, ये 3 इधर भी है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। इसका मतलब 3 इंटू 4 12, 3 into 4, we get 12 favorable outcomes. Therefore, probability of getting a face card is equal to 12 divided by 52. 4 3s are 12, 4 13s are 52. तो 3/13 हो जाता है। Third part of the question, a red face card. Yeah, red face card. Number of favorable outcomes. Red face card meaning हार्ट और डायमंड ही चुनना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 इंटू 2, 6 फेवरेबल आउटकम्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड is equal to 6 divided by 52. 2 3s are 226 are, मतलब 3/26 हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट, वो क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट में? द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। हम नोटिस कर सकते हैं जैक ऑफ हार्ट्स खाली एक ही है, मतलब favorable outcome, number of favorable outcome is only 1. Therefore, probability of jack hearts is equal to 1/52. फिफ्थ पार्ट में जाएंगे। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? A spade,
इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है 13 है, क्योंकि स्पेड में 13 कार्ड है, स्पेड में 13 कार्ड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/52, वो निकलता है 1/4। लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड एक ही है, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है only one, therefore probability of queen diamond is 1/52। यही है इसका सोल्यूशन।